Let's now continue from where the minister has left, as in talking about the social sector schemes, the sectors of health, education, the places where the finance minister seems to have focused a lot in his budget speech, apart from agri sector and the rural India. Let me introduce, before we begin, to the panel of guests which we have right now in the studio, starting with Mr. Yatish Rajawat, senior journalist. We still have Mr. Dhanendra Kumar, an expert on several issues, including education. And then we have Professor Yamini Agarwal as well with us. We're also joined by Muhammad Ani Khan, a Congress spokesperson, and we will soon be joined by BJP leader as well. But before we discuss the health and education sectors, let's look at another news. Prime Minister Narendra Modi has hailed the union budget. He said it will strengthen the aspirations of the people of the country. He also said it is development friendly and will help realize the dream of a new India. He said the budget is aimed at ease of living. वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को और उनकी पूरी टीम को इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बजट न्यू इंडिया की नींव को सशक्त करने वाला बजट है। देश के एग्रीकल्चर से लेकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर बात पर पूरा ध्यान दिया गया है। गरीब और मध्यम वर्ग की चिंताओं को दूर करने वाली हेल्थ की योजनाएं हैं, आरोग्य की योजनाएं हैं, तो देश के छोटे उद्यमियों की वेल्थ बढ़ाने के वाली भी योजनाएं शामिल है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर के फाइबर ऑप्टिक्स तक, सड़क से लेकर के शिपिंग तक, युवा से लेकर के सीनियर सिटीजन तक, ग्रामीण भारत से लेकर आयुष्मान भारत तक, डिजिटल इंडिया से लेकर के स्टार्टअप इंडिया तक, यह बजट देश के 125 करोड़ लोगों की आशा अपेक्षाओं को मजबूत करने वाला बजट है। उनकी लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलवाने की घोषणा मैं वित्त मंत्री जी विशेष रूप से सराहना करता हूं। सीनियर सिटीजन के योगदान की वंदना मैं एक बार फिर वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने वाले और न्यू इंडिया की नींव को और मजबूत करने वाले इस बजट के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेगा, ये मेरा विश्वास इस बजट के बाद और मजबूत हुआ है। So this was the Prime Minister expressing his views on the budget presented earlier today in the Lok Sabha by Finance Minister Arun Jaitley. Let's go back to our discussion on education. Let me bring in Mr. Dhanendra Kumar. Mr. Kumar, you've been listening to the budget with us only since morning, and a lot of effort has been put in by the Finance Minister, it seems, on two sectors, that's health and education. If you look at education first, there are specific comments which he has made in his budget speech, and one of them is that technology will be the biggest driver in involving education and in reviving the way our education industry is set as of now. He's given a term, RISE, R-I-S-E. So what exactly is the government looking at in terms of technology, initiation of technology in education? As I was trying to mention in the earlier segment of this discussion, India's biggest asset is its human resources, its children, its youth, and we hold tremendous promise in getting them the quality education. Education, yeah, health. If we look at some of the deliverables and outputs and so on, in the World Development Report of 2018 of the World Bank, which is captioned Realize Education Promise,
India ranks second after Malawi from the bottom among the underdeveloped countries or lesser developed countries, where children reading in the second grade cannot read even one word of a text. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करें हम, ताकि वो एजुकेशन के साथ लर्निंग की तरफ भी उनकी तरफ सुदृढ़ हम कर सकें. इसके लिए जो राइज आपने जैसे कहा, इट इज़ रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन सेक्टर. तो वो अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि वो ब्लैक बोर्ड को चेंज करके डिजिटल ब्लैक बोर्ड की तरफ जाना चाहते हैं. और इस साल जो प्राविधान हुआ है वो 72,000 करोड़ से बढ़ा के 79,000 करोड़ हुआ है. एजुकेशन की क्वालिटी को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, इस तरफ सरकार ने ध्यान दिया है. एकलव्य स्कूल के अंतर्गत ट्राइबल एरियाज़ में जिन ज़िलों के अंतर्गत शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, उनकी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है और 30,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ उसमें हैं, तो उनको उनके सबके अंदर नवोदय के पैटर्न के ऊपर स्कूल स्थापित किए जाएंगे. और कुल मिलाकर अब जो एम्फेसिस होने जा रहा है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से पर होगा, टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर भी और सब कुछ, ताकि बच्चे जो पढ़ के निकलें हमारे, वो पढ़ने के साथ साथ लर्निंग और उनकी काबिलियत के ऊपर भी तवज्जो हो सके, ताकि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान ना हो, वो सीख क्या रहे हैं, उनका स्किल सेट क्या है, उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए. Let me bring in Yatish Rajawat here. Yatish, if you look at the pointers as far as education sector is concerned, it is quite clear that a lot of focus is on the quality of education, is on improving the quality of education. Specifically, the initiatives like 1,000 best scholars to be given chance to pursue their PhDs, and the added initiative is that they should be willing to go ahead and teach also. So government is trying to also ensure that the benefit reaches to others as well who have not been able to become part of this particular beneficial cycle. So the three things which are very interesting in the finance minister's speech. One was that he said that these prime minister's research fellows will be given a very high compensation if they become one, and they will spend a part of their time in teaching in another premier institution. Second was that he was saying that we are now focusing on the learning outcomes. So earlier they were used to focus on the person of students who have passed. Okay, so if 88% student have passed, it used to be celebrated, or if it improved from 88 to 90, it was celebrated. But now he's saying that we will focus on learning outcome, which means to say that on the three subjects, which is reading, writing and mathematics, how is the child doing? And this has been the focus of, if you see the Pratham report, the annual survey of education, it says that it is not important whether the child has done 5th class or 8th class, but what is very important is what is his level of learning. That means that is he able to write correct Hindi or correct English, is he able to solve a mathematical equation which is appropriate for that class. So that was another focus in the budget which the finance minister impressed upon. The other was which mentioned earlier also about upgrading these Eklavya Vidyalayas to Navodaya Vidyalaya. What happens when these Vidyalayas are upgraded is automatically the quality of teachers going to these institutions improve. And then specific focus on ensuring that this is being done in areas where the scheduled tribe population is above 50%. That's like focusing on a special social segment as well. Because you see, those are the areas, those are the backward areas where you don't have private schools. Rest of the country, if you look at it, private schools penetration is now much better than government schools. So the percentages are now geared more, and more people like to spend their children to private school rather than to government school. So it is very important that the government spend money in time to improve the level of these government schools, so that they become aspirational for people. Otherwise, over a period of time, they will lose their student base, so to say. But Vishal, what I really wanted to talk about was this health insurance scheme that the government has announced. We've been saying for a very long time that health is a crucial matter, because the government statistics prove that if you go in for a critical care like a heart disease or a brain cancer or any cancerous disease,
30% of the population which goes into critical care in a hospital end up into healthcare bankruptcy. Yes, obviously. And we'll come to that healthcare part definitely, because we're looking at it segment wise. We'll come to the health also. But staying with education, Yatish, one very important point is that the finance ministry is making it clear that it's not only about quantity, it's not only about setting more schools, setting more colleges, but is also not overlooking that part, clearly visible, wherein the finance minister is pointing out in his budget speech and saying clearly that one medical college per 3 parliamentary constituencies will be established. So the balance between quality and quantity is something which has been maintained. Is that what we're looking at? Yeah, so in the case of healthcare or medicine, you know that the challenge we face is that the quality of medical colleges is very poor, and that's basically because the organization which is supposed to give clearance to them was a highly inefficient and corrupt organization, which is the Medical Council of India. So therefore the government wanted to replace that medical council with a government institution, which was the Medical Commission. And in line with that, the government also wants to increase the number of medical colleges so that the supply of doctors can increase. So that is the effort. So the two things they've done. One is that they said that the district hospitals will be upgraded, and the medical colleges in every 3 parliament district area would be set up. So that's when the government says that we are going to set up new medical college, it will automatically improve the standard of other medical college in that area. And will also lead to, additional infrastructure also coming in. Let me bring in Yamini here on this. Yamini, education sector, if you're looking at, and the way Yatish is pointing out that, it's not only about quality, and it is also not only about quantity. What the finance minister seems to have done, as far as this government's vision for the next year and the budget expenditure which has been slated out there, is that set up good new medical colleges, set up good new professional institutions, but also look at quality and make use of technology in that. Well, if you look at education expenditures in the past which have been there, they have been trying to create new IITs, IIMs, or the higher education institutions that have been there. If you look at this time's budget as against, let's say, last year's or the other previous year's budget, is that they've tried to focus on primary education, especially for the underprivileged. So when you are actually talking about Eklavya schools which are to be created, they are supposed to be created for the underprivileged or the people who have really not received the benefit of education till date. Okay, and that is why we are actually creating these Eklavya schools or Eklavya models that are there. Also, there has been a focus on research and development, because we understand when we actually talk about, let's say, coming up of internet itself, internet in US actually started from universities, or let's say from the military itself. So when you talk about newer innovations or newer developments coming through, there are fertile grounds which are found in the young minds, and the young minds, the brightest minds, are found with the BTechs. So they have been given an opportunity to actually bring about a research bent to themselves, with actually bringing about an integrated program whereby they can actually study at the PhD level, as well as educate people with what they have learned and what they have contribute to the society. So it's not only learning, but you are also contributing to the society. Another important aspect which has been taken care of in terms of education is that what has happened is, with digitalization, we found that people have been questioning basic literacy levels, or people have been questioning financial literacy levels, and that is why he said we are not really going into the blackboards alone. We are going to look at digitalized blackboards which are there. So we are going to upgrade people from the school level itself, whereby they may actually get adapted to technology to become a part and parcel of their lives, and so that they can become a part of the economic progress and economic development which has been taking place and has been driving growth in the economy. Okay, so the use of technology to drive both the quality of education and the growth in economy. Let's now move to another sector, that is health, and we have also, in our studio, Mr. Rajendra Agarwal, Member of Parliament from BJP. अग्रवाल जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं. अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो एक बहुत बड़ी घोषणा आज वित्त मंत्री की तरफ से हुई है, और वो एक जिसे कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सरकार समर्थित योजना जिसे कहा जा सकता है हेल्थ सेक्टर में, वो एक आज उसकी घोषणा की गई है. 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी जहां तक उनकी हेल्थ कवर की बात है. किस तरह से आप देखते हैं इसका असर पड़ेगा ग्रामीण इलाकों में, खासतौर पे गरीब जो तबका है उसमें? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वास्तव में लैंडमार्क जैसे कुछ डिसीजन होते हैं वैसा डिसीजन ये है. ये
और साइज़ के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से भी, जैसा खुद वित्त मंत्री जी ने कहा, आपने भी जिस बात का उल्लेख किया कि संसार की सबसे बड़ी ये योजना है ये। देखिए, आज भी गरीब जो वर्ग है उसको किसी प्रकार की सिक्योरिटी अगेंस्ट इलनेस नहीं है, किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है। वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है या मर जाता है। थोड़ा बहुत कोशिश जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के माध्यम से की गई थी, वो छोटी कोशिश थी, शुरुआत थी, वो अच्छी कोशिश थी, वो जिसमें 2 लाख का बीमा दिया जाता था, सुरक्षा बीमा, परंतु वास्तव में बहुत ही बड़ा ये कदम उठाया है। इसकी वजह से जहाँ गरीब आदमी एक एश्योरेंस फील करेगा कि मेरे ऊपर सरकार का एक छाया है, मेरे को कोई कष्ट यदि होता है तो द गवर्नमेंट इज हेयर टू टेक केयर ऑफ मी एंड माई फैमिली। और इसका साइज देखें तो वास्तव में इतना, यानी लगभग नियरली आधी पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन इसके इस छाते के अंदर आ जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, इसके अंदर क्या होगा, नेचुरली जहाँ सुरक्षा का भाव परिवारों में पैदा होगा, उनकी जो क्षमता है उसके अंदर भी काम की क्षमता वो निश्चिंतता दिखाई देगी। वहीं पर मेडिकल सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट लेवल पर उसमें बढ़ेगा, वो तो वो सेक्टर करेगी वो। तो ऐसे अनेक प्रकार के इसके परिणाम होंगे। और मैं समझता हूँ, हाँ मैं समझता हूँ कि जो मुझको जो लगता है, देखिए बजट के अंदर जो प्रारंभिक टिप्पणी वित्त मंत्री जी ने की कि हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं, हम एक समग्र रूप से सारी चीज़ों का विचार करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी हिस्सा, कोई भी क्षेत्र या कोई भी वर्ग वित्त मंत्री की निगाह से बचा नहीं है। तो बजट के अंदर 1.25 घंटे की उन्होंने भाषण में सारे विषयों को उन्होंने छुआ है। लेकिन जो 2 बातें मुझे बहुत ज़्यादा इसकी महत्वपूर्ण लगती हैं, एक तो हेल्थ का ये, और दूसरा किसानों को लेकर के जो उन्होंने स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर 1.5 गुना लागत का मूल्य देने की, 2 चीज़ें इतनी बड़ी चीज़ें हैं जो लैंडमार्क हैं और निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देंगी। एक नज़रिया जान लेते हैं विपक्षी पार्टियों का भी। हमारे साथ मोहम्मद अली खान मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खान साहब, ये जो ग्रामीण इलाकों में गरीब आदमी की जो सेहत को लेकर जो फैसला किया है सरकार ने, और जिस तरह से राजेंद्र अग्रवाल जी भी बता रहे थे कि इसे एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माना जा सकता है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? ज़रूर आम आदमी के लिए, ख़ासतौर पे गरीब आम आदमी के लिए बहुत ही राहत की बात। देखिए सर, मैं शुरुआत ऐसे करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत बड़ा बजट है, उसमें काफ़ी मैक्रो फैक्टर्स हैं, पहले उनकी बातचीत कर लेते हैं। मैं अपने बड़े भाई राजेंद्र अग्रवाल साहब की बात सुन रहा था, बड़े सकारात्मक नज़रिए से देख रहे हैं इस बजट को, और मैं बिना किसी झिझक के कह सकता हूँ ये नहायत ही ख़राब बजट था। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपके चैनल की मर्यादा रही है कि सिर्फ तथ्यों पर आधारित बातें होती हैं, पॉलिटिकल रेटरिक का इस्तेमाल नहीं होता। मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए मैं आपको ये 2-3 बिंदु आपके सामने रखता हूँ और आप खुद अपना फैसला कर लीजिएगा। आपको याद होगा 1997 में चिदम्बरम का ड्रीम बजट आया था। वो कोalition सरकार थी, मजबूरियाँ थी कोalition की, मगर उसके बावजूद उस बजट ने मिडिल क्लास के लिए टैक्सेस कम किए थे, कॉर्पोरेट टैक्स हार्मोनाइज किया था और रेवेन्यू कलेक्शन और फिस्कल डेफिसिट को पकड़ में लाए थे। आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। इन लोगों के पास पूर्ण बहुमत थी। जो आपका फाइनेंस बिल होता है राज्य सभा से, उस अनुमति तो चाहिए नहीं होती है, तो आपको किसी की मजबूरी भी नहीं थी। आज जो आपने अपने 5वें साल में ये बिल पेश किया है, ये ऐतिहासिक ज़रूर है, मगर इस वजह से नहीं जिस वजह से राजेंद्र अग्रवाल और उनके सहयोगी बता रहे हैं, इस वजह से क्योंकि इसने बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटियां हैं। सबसे पहली बात तो ये, जनाब आप आके देश को बता रहे हैं, आप आगे जाके क्या करेंगे? आपको बताना चाहिए, आपको हिसाब देना चाहिए आज तक आपने क्या किया। और अब मैं आपके सामने बस 3 बिंदु रखूंगा। नो पॉलिटिकल रेटरिक। लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ केयर, right? Everyone is saying this healthcare scheme is amazing. I heard someone say that it's larger than the Medicare scheme in the United States because it covers 50 crore people. Of course, any scheme in India would be larger in terms of size. But tell me something. Isn't this a scheme designed to divert money into the pockets of private hospitals? Don't get me wrong. And here is where it is important to learn. But there is no. I'll tell you why I'm saying that. Another way of looking at it, because something I'll butt in here. We'll come back to you. Don't worry, we'll come back to you. We'll let you complete as well. If you listen to me, Khan Saab, first, this is something on this particular point. We have already had a comment coming in. I just want to bring that to your notice that there are 2 ways of looking at it. This is also going to boost investment from the private sector as well. This is something which I wanted to bring to your notice. So if you club both, then yes, please continue. I'll take that as a fair point. Now, I understood the gentleman next to you made some very, very good points about this issue, but I have a different question to ask you. It's about what was left unsaid. 2.5 lakh crores has been made in terms of revenue received from the savings on oil. This is a fact. These are figures published by the Ministry of Oil and Petroleum and so on and so forth. How many AIIMS and how many private hospitals could have been set up with that money? Why was that money not diverted to this purpose? You're telling me in the 5th year of your term, you're going to set up 26 private medical colleges, 1 for every 3 districts? I'm sorry, it's too little too late. Second point. I'll tell you about the Rural Development Ministry, and I think I'm in some position to talk about it because I was an officer on special duty to the minister of that ministry for 3 years. Now,
आप बात करते हैं, मेरे बड़े भाई जो अभी तोमर साहब मंत्री हैं वहाँ पे, वो बात करते हैं कि आज आउटलेज इतने बढ़ा दिए। जनाब पिछले साल भी आपने बड़े गर्व से कहा था कि आपने मनरेगा के आउटलेज बढ़ा दिए। इस साल के आखिर में हम आंकड़े देख रहे थे, हाउ मच हैज बीन स्पेंट? There is demand on the ground, but money is not reaching them. You claim because people don't have Aadhaar or because there is no rationalization of demand, etc., etc. आप जितना पैसा बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए। आप स्कीमों के नाम बदल दीजिए, दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन। Please give figures as to how the money is being spent. And finally, this. I think I've spoken the least of anyone, so let me just finish this point. Somebody said technology is a very important part, and Prime Minister Modi also came forward and said, yes, technology is great. In the same budget, you have increased custom duties on mobile phones by 10%, making them costlier. Where is the smartphone revolution? Is it only for a certain segment of the people? MSP, and this is very important. I would urge all of you, not as a congressman, to read Yogendra Yadav's table that he's put up on Twitter. This MSP is on production cost. That is a very clever manipulation of figures. Production cost is not the basis that farmers ask for. And different farmers groups have come out and said this is not fair. Because the UPA was paying much more at that point of time if you take the production cost. Let's stick to the segment which we are looking at right now. There are definitely going to be criticisms from you, and obviously, if the opposition does not criticize, then who will at the government? But coming back to your point which you made on the health sector, Rajendra ji, आप सरकार के सांसद हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस बात को? ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये प्राइवेट सेक्टर से, आप कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को फायदा होगा, उनकी जेब, कौन सी चीज आपको लगता है ज्यादा? मुझे अजीब बात लगती है, कोई व्यक्ति बीमार होगा तो फायदा बीमार आदमी को होने वाला है कि इलाज देने वाले को होने वाला है? ये अजीब तर्क है। ये बीमार आदमी को फायदा पहुंचाने की नीति सरकार की है। ऑफ कोर्स जो उसको इलाज देगा उसको भी छोटा मोटा फायदा होगा। बेसिक थिंग इज दैट कि ये जो लाभ है, यानी इसका मतलब तो आप किसी बीमार को फायदे मत पहुंचे, डॉक्टर को अपना फायदा नहीं पहुंचेगा। ये तर्क गलत है। दूसरा, इट इज पुटिंग द बुलक बिफोर द कार्ट। Putting the bullock before the cart. Yes. See, when the government turns the largest buyer of healthcare services, and a single largest buyer is buying healthcare for 40% of the population, what do you think that single largest buyer will do? It will go back and negotiate the rates of healthcare services. ये प्राइमरी आर्गुमेंट है एक गवर्नमेंट की हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम होने की। ये हिंदुस्तान की भी आर्गुमेंट नहीं है, ये दुनिया भर की आर्गुमेंट है। हेल्थ केयर कॉस्ट को अगर आपको कम करना है तो अभी आज की तारीख में क्या है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी दाम मांगता है, उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? या तो आप कानून ले आइए कि प्राइस को रेगुलेट करिए। दूसरा तरीका यह है कि गवर्नमेंट सबसे लार्जेस्ट बायर हो जाए हेल्थ केयर सर्विस का, फिर वो जाके नेगोशिएट करे कि इस ट्रीटमेंट का इससे ज़्यादा कॉस्ट आप नहीं कर सकते। तो ये तो आर्गुमेंट गलत है खान साहब की कि ये इसका प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करेगा। एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर के प्राइसेस कंट्रोल होंगे अगर ये स्कीम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होगी। दूसरी चीज़ जो खान साहब कह रहे थे मनरेगा की, मैं फैक्चुअली करेक्ट करना चाहूंगा उनको कि 48,000 करोड़ और 55,000 करोड़ इस बार I'll have to cut you here because we have the Union Minister Piyush Goyal addressing a press conference here. Let's listen into what the senior minister of Narendra Modi government has to say on this budget.